ओके चलो हम स्टार्ट कर दवा डिस्कशन ओके गुट्टे सेकंड मो स्क्रीन शेयर कर दिए गिव मी 1 minute समझ स्क्रीन देखा होची एडी कंफर्म कर दियो हाँ सर ओके स्क्रीन समझ देखा होची YouTube रे समस्या देखा होची इटे स्क्रीन देखा होची ओके सो yes good evening all तो बेसिकली आमे एटा एबे जो 2021 हमर मेंस हबो तो ता पे ऑप्शनल पे एक क्रैश कोर्स एटा ओडे स्टार्ट करछु तो एटा इट विल बी ए क्रैश कोर्स एंड टेस्ट सीरीज बोथ तम कॉपी भी इवैल्यूएशन हबो एंड वी विल डिस्कस ऑल द टॉपिक्स सो एटा एमिति डिजाइन माने करा हेची कि द टेस्ट सीरीज जोडा हम तम लेखियो दबु सेथरे तम सिलेबस एंटायर सिलेबस कवरेज रहइबो राइट टोटल 12टा टेस्ट रहइबो 12टा रे तमरा 8टा रहइबो सेक्शनल एंड बाकी 4टा रहइबो हमर फुल लेंथ
माने complete syllabus थिबो but all the sectional tests will be of 300 marks माने तम sectional test भी 100 मार्क रो कि 150 मार्क रो हबनी पूरा 300 मार्क रो ही हबो तम sectional test लागो तो in this way हमें पूरा syllabus cover करिवा so it will be a crash course come our like test series okay so एटा द फर्स्ट क्लास था तो ऑलरेडी हमें लास्ट संडे हमें क्वेश्चन एटा दिया ही थिला राइट सो एटा लास्ट संडे हमरो क्वेश्चंस दिया ही थिला तो आज ही हमें तार डिस्कशन करिवा ओके क्लियर ओके चलो तो स्टार्ट कर दो ओके तो फर्स्ट हम स्टार्ट करिवा ଗୋଟେ 20 मार्क क्वेश्चन रो write about the early agricultural and pastoral communities of India okay so we'll start with this question समझ स्क्रीन देखा होची समझ स्क्रीन देखा होची राइट ठीक है रेस्पॉन्ड कर दियो स्क्रीन देखा होची नहीं Yes, sir. Yes, sir. ओके टी चेक कर दियो कि अच्छा लाइक पूजा के चेक कर दियो YouTube रे देखा होची ना टी चेक कर दियो YouTube रे सब ठीक अछि नहीं Yes, sir. सब ठीक अछि ठीक है ओके ठीक है तो द फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 मार्क्स वाला पढ़थिला कि राइट अबाउट द अर्ली एग्रीकल्चरल एंड पैस्टोरल कम्युनिटीज ऑफ इंडिया ओके तो लेट्स सी रे कौन लिखिबा तो फर्स्ट जिंस वाला ए माने की है ए जो अर्ली पैस्टोरल एंड एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज ईपैक राइट हु आर दिस पीपल ए माने की है सो फर्स्ट हम सेम से डिफाइन करिवा राइट then we will talk about the characteristics features of these communities अगर कौन features अछि जो थे हम आइडेंटिफाई करते मन को and then the regional distribution of impact right इंडिया को जगह रे को टाइम फ्रेम माने मिली चंती and तांको significance कोन what are the significance of these groups right तो एटा हमें डिस्कस करिवा this will be the structure for our answer फर्स्ट जिंस वाला ए माने की है अर्ली पैस्टोरल एंड एग्रीकल्चर कम्युनिटीज की है सर आपण म्यूट अछंती मुझे किछि सुना होतला आई डोंट समबडी म्यूटेड मो कथा तो होतली लास्ट कौन सुनिला एनीबॉडी ओके a question में हमर पचाची राइट अबाउट द अर्ली एग्रीकल्चर एंड पैस्टोरल कम्युनिटीज इन व्हाट इज इट Okay, so basically first हमको लिखिया पूरी इंट्रोडक्शन रे who are these early agricultural and pastoral communities so माने किए right so then we will talk about their characteristics features अगर कौन एमिति फीचर्स अछि जो थोड़े हमें ताको यूनिकली आइडेंटिफाई करि परिया right then ताको रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया रे को जगह रे को टाइम रे माने दिखाई छन and then their significance right so we will discuss in these lines so प्रथम इंट्रोडक्शन हम लिखिबा who are these IPAC ए अर्ली pastoral and agricultural communities किए all of us know
ଆମର इनिशियली जो हमर इंडियन सबकंटिनेंट रे जो ह्यूमन बीइंग्स थिले तांकर जो इकोनॉमी थिला तांकर जो सस्टेनेंस थिला इट वाज बाय हंटिंग एंड फूड गैदरिंग राइट दे डिड नो एग्रीकल्चर जान नथिले से माने इवन पैस्टोरल जो डोमेस्टिफिकेशन ऑफ एनिमल्स भी जान नथिले राइट कंप्लीटली से कोन करथिले बुलुथिले गछरे जो फल मिलुथिला फल मूल खाउथिले कि वाइल्ड एनिमल्स को हंट करी खाउथिले तो तांकर कंप्लीट जो इकोनॉमी थिला कि तांकर जो मोड ऑफ सस्टेनेंस थिला इट वाज बाय हंटिंग एंड फूड गैदरिंग until the Mesolithic period started right Mesolithic period जतबेले हमर 8000 BC रे हैला राइट सेतबेले हम धीरे धीरे पैस्टोरल लाइफ से सिखिले पैस्टोरल लाइफ माने ताकर जो इकोनॉमी हे गला तो सस्टेनेंस हे गला इट वाज बेस्ड ऑन एनिमल्स राइट एनिमल्स ताकर लाइक मिल्क ताकर यूज करले राइट छेना फना खाइले तो बेसिकली ऑल द एनिमल प्रोडक्ट्स हे गला ताकर जो शिप रो ऊल काडीकरी तार स्वेटर बनेले लेदर काडीकरी तार पई जैकेट बनेले so this was the domestication the pastoral economy of coach right then again 5000 BC रे हमरा एग्रीकल्चर स्टार्ट हैला this was a big thing right हम सुनिया बहुत नॉर्मल लागो छी कि एग्रीकल्चर स्टार्ट हैला but it was not that simple जो लोक माने इतने वर्ष हो गला so they were into hunting and food gathering ताकर जो सस्टेनेंस निर्भर थिला कि से जागा रे फूड मिलु छी ना नहीं so they were leading a nomadic life यार से जागा पर बळे बोलुथिले ताकर गोटे सेटल्ड लाइफ नथिला बिकॉज़ ताकर सेमिति किछि माने गोटे जागा रे ताकर एग्रीकल्चर नै कि इमिति परमानेंट सोर्स ऑफ फूड तांको गोटे जागा रे मिल नथिला तो से माने गोटे जागा रो आ गोटे जागा माइग्रेट करथिले इन सर्च ऑफ फूड राइट कोडे जो एठी जति सीजन अछि एठी किछि भलो फल मूल मिलला से जागा रहिले एनिमल्स अछंती सेठी रहिले तो से जागा धीरे धीरे देतबेले मे बी फूड तांको सरी थिबो दे विल माइग्रेट टू अदर प्लेस so it was a nomadic life they were leading a nomadic life and their economy or sustenance was based on hunting and food gathering difficult life thila धीरे धीरे टिके मेसोलिथिक केस आसिला टिके बेटरमेंट आसिला because they learned domestication of animals से माने जानि पारले कि हमें sheep को कि goat को कि ram को एमानु को हमें घरे रखि परिबा ताको पाली के रखि परिबा ताको यूज करी कि ताकर स्किन आउट करी कि हमें लेदर जैकेट करी पिंदी परिबा पैंट शर्ट बनी पिंदी परिबा लेदर रो ताकर शीप रो ऊल रे हमें स्वेटर पिंदी परिबा ताकर खीर पनीर करी छेना फना करी हमें खाई परिबा राइट सो टिके बेटरमेंट लाइफ हे गला नाउ टिके टेक्नोलॉजिकल एडवांस हे गला टिके लाइफ बेटर हे गला 8000 बीसी बेलको राइट अगेन 5000 बीसी बेलको ओडे मिरेकल हे गला ओडे रिवोल्यूशन हला हम रिवोल्यूशन काई कहू एटा रिवोल्यूशन इज समथिंग वेरी ड्रास्टिक चेंज राइट इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम जो बहुत बड़ा चेंज आसे व्हिच चेंजेस योर कंप्लीट लाइफ which changes your normal way of things जो normally चलतुला से चलीबनी something drastic we call that revolution 5000 BC रे गोटे revolution आसिला कौन revolution agriculture स्टार्ट हे गला agriculture स्टार्ट हे गला तार मीनिंग बुझ परछ आज जे से माने hunting and food gathering के चलुथिले their sustenance was बुली बुली जोटे ताको मिलला फल मूल खाउथिले कि मीट खाउथिले now they learned the art of growing their own food वर्तमान इन देयर बैकयार्ड से माने चाଷ करी करी तमरो व्हीट की राइस से माने ग्रो कर परथिले नाउ दे आर नो मोर डिपेंडेंट ऑन द मर्सी ऑफ नेचर आउ प्रकृति ऊपर तांकर निर्भर एते हबार नाही नाउ दे कैन लीड ए सेटल्ड लाइफ नाउ ताको जाजाबर भरिया ताको एठी सेठी बुलिबा को पड़िबो नाही बिकॉज़ सी एग्रीकल्चर करिवा सिखि एचंती now they have learned to grow their own food hela so bahut bada insight it was a big thing it was a big technological leap right तो सेति भाई हम आपको कहूछु neolithic revolution 5000 BC रे हम कोन कहूछु कोन हला we are calling it neolithic revolution काहे कि neolithic revolution neolithic period रे हमर एग्रीकल्चर स्टार्ट हेतिला हमर nomadic life एंड हे हेतिला
now people started leading a settled life. ସେମାନେ ନିଜ ଘର ବାଡି ବନେଇଲେ, ପଟା ଫଟା କଲେ, ନିଜ ପିଲା ଛୁଆ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଜମି ଫମି ରଖିଲେ, ମାନେ ଲାଇଫ ସେଟେଲ, ଖାଇବା ପିଇବା ସର୍ଟେଡ, ଆଉ ଟେନସନ ନାହିଁ ଲାଇଫ ରେ କିଛି, ଆରାମ ସେ ଘରେ ବସିଲେ, ରାଇଟ? ସୋ ଦିସ୍ ୱାଜ ଦ ନିଓଲିଥିକ ରିଭଲ୍ୟୁସନ। ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯୋଉ 8000 ବିଷୟରେ ଆମେ ଡିସ୍କସ କଲେ କି ପାଷ୍ଟୋରାଲ ଲାଇଫ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, 5000 କି 6000 ବିଷୟରେ ଆମେ ଡିସ୍କସ କଲେ କି ଏଗ୍ରିକଲଚରାଲ ଲାଇଫ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। Now these communities who started this pastoral and agricultural life in India, they are called the early agricultural and pastoral communities. बुझेला? ଏଇ ଯୋଉ ଆମେ କହୁଛୁ 8000 ବିସିରେ pastoral life start ହେଲା ଇଣ୍ଡିଆରେ, ମାନେ ଲୋକମାନେ ଡୋମେଷ୍ଟିଫିକେସନ ଅଫ ଆନିମଲ୍ସ ଶିଖିଲେ। 5000 ବିସିରେ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଶିଖିଲେ। ଆରେ କିଏ କଲା? କିଛି ଲୋକ ତ କଲେ। ଯୋଉ ଲୋକମାନେ এটা ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ କହୁଛୁ early pastoral and agricultural communities, IPAC. This is the definition. ତ ଏଇଟା ଆମର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ଆମେ ଲେଖିବା, ଆମେ ଡିଫାଇନ୍ କରିବା କି IPAC କିଏ ହେଲା। IPAC ହେଲା ସେଇ କମ୍ୟୁନିଟି, ସେଇ ପାଇନିୟର କମ୍ୟୁନିଟି, they were the first communities who introduced pastoral life and agricultural life in India. So they are IPAC. ତାଙ୍କୁ IPAC ଆମେ କହୁଛୁ। So IPAC brings, so the IPAC bring Neolithic age in the region. जोठे जोठे एई communities माने इंडिया रे मूव करले, सेही सेही जगह रे Neolithic age स्टार्ट ହେଲା। ମାନେ ମୁଁ କହିବା କଥା डिफरेंट जगह रे डिफरेंट टाइम रे स्टार्ट हेची। इंडिया रे भी तमर होल इंडिया रे डिफरेंट जगह रे डिफरेंट टाइम पीरियड रे स्टार्ट हेची Neolithic age टा। जेबे जेबे एई लोक माने एई कम्युनिटीज माने डिफरेंट जगह को माइग्रेट करचंती, ସେମାନେ ସେଇ ସେଇ ଜାଗାରେ ନିଓଲିଥିକ ଏଜ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଯୋଉ ଯୋଉଟା ଗଲେ ସେଇଠି ସେମାନେ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ, ଆପେ ଆପେ ସେଇଠି ନିଓଲିଥିକ ଏଜ ସେଟେଲ ଲାଇଫ ହେଇଗଲା, ନିଓଲିଥିକ ଏଜ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା। ସୋ ଦିସ୍ ଇଜ ଦ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ वी विल राइट अबाउट IPAC। नाउ द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ IPAC, आंकर ଆମେ ଜାଣିବା କେମିତି ଏ କିଏ? ଠିକ ଅଛି, ଆମେ डिफाइन କରିଦେଲେ କି ଏମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଲୋକ ଯିଏ କି ଏଗ୍ରିକଲଚର କି ପାଷ୍ଟୋରାଲ ଲାଇଫ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛନ୍ତି। କୁଲ, ଜାଣିବା କେମିତି? ସେଡେଣ୍ଟରୀ ଲାଇଫ, these people they led a settled life, right? No more nomadic life, ସେମାନେ ଗୋଟେ settled life, ନିଜେ ଘର ଫର କରି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହିଲେ। they grew rice, wheat, barley, peas, lentils, they grew their own food. basically ସେମାନେ एग्रीकल्चर कले, निज फूड निजे ग्रो कले। तो ସେମାନେ कौन कौन ग्रो करथिले? राइस ग्रो करथिले, wheat ग्रो करथिले, barley ग्रो करथिले, right? peas ग्रो करथिले, तो lentils ग्रो करथिले। so they grew all this your crops. They domesticated animals like goat, rams, sheep, right? So not only agriculture, even pastoral domestication of animals भी ସେମାନେ କରୁଥିଲେ, right? They lived in thatched houses, mud houses ରହୁଥିଲେ, bamboo ଆଉ mud ଲଗେଇକି houses ରହୁଥିଲେ। Advanced tool culture, ତାଙ୍କ ବେଳେ the tool culture was advanced. We will see कि ସେମାନେ तमरो नियोलिथिक की मेसोलिथिक एज रे जो माइक्रोलिथ यूज करथिले, राइट? स्मॉल स्मॉल तमरो 3 to 5 सेंटीमीटर वाला स्टोन्स यूज करथिले, बोन टूल्स यूज करथिले। एडवांस टूल कल्चर तांगा थिला। नो मोर तमरो बड बड कोर स्टोन्स थिला, बड बड नै, बहुत फाइन टूल माने टूल्स यूज करथिले। तमर शेविंग पे टूल हे गला, छोट छोट एडवांस टूल्स जो तमर एनिमल रो, तमे शिप रो जो हाइट ता तार स्किन ता आउट करिवो ता पे टूल हे गला। तो वेरी एडवांस टूल कल्चर तांगा थिला। एंड देन सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, राइट? निज पे निजे ग्रो करथिले, निज बैकयार्ड रे सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर से प्रैक्टिस करथिले। दीज आर द वेरी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो थरा हमें ग्रुप को आइडेंटिफाई कर परिबा, राइट? स्टार्टिंग फ्रॉम सेटल लाइफ, एग्रीकल्चर, डोमेस्टिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, द मड हाउसेस और थैच्ड हाउसेस, एडवांस टूल कल्चर। तो एगुडा सब डिफरेंट फीचर्स जो थरा हमें आइडेंटिफाई करछु। Now coming to regional distribution, इंडिया रे को जगह रे को टाइम रे मिली चंदी। प्रथम यदि हम नॉर्थ वेस्ट देखिबा, सो नॉर्थ वेस्ट रे हमर बेलन वैली अछि, राइट? सो बेलन वैली इट इज इन मिर्जापुर यूपी, राइट? समस्त देखिथिबो तमरो मिर्जापुर वाला सीरीज, राइट? सो से मिर्जापुर रे तमरो बेलन वैली रे से जगह ना हला कोनिडिहावा, सेठी तमरो 6000 BC रे तमरो मिलिछि।
राइट एटा हमरो द फर्स्ट एविडेंस ऑफ राइस हेड ग्रो होई फर्स्ट एविडेंस ऑफ राइस राइट तो बेलन वैली हे गला हमरो यूपी मिर्जापुर बोलन वैली हेला हमरो बालूचिस्तान इन पाकिस्तान राइट हमर जो पापियो के सेपटे हमरो अछि बालूचिस्तान तो बालूचिस्तान रे हमर बोलन वैली अछि सेठे मिलिछि 5000 बीसी रे सांबर लेक राजस्थान में सांबर लेक रा हमरे फूड ग्रेन्स मिलिछि हमर जो चैड फूड ग्रेन्स ताकर जो से सांबर लेक रो बेड ऊपर हमको फूड ग्रेन्स मिलिछि राइट चैड राइस मिलिछि एठे सो नॉर्थ वेस्ट रे हमरो इफ यू सी द टाइम पीरियड इट इज 6000 5000 जनरली 5000 to 6000 BC तो इंडिया रा सबुट आगो ए पीरियड स्टार्ट हेतला तमरो नियोलिथिक लाइफ राइट यू कैन सी नॉर्थ वेस्ट रे हमरो यूपी रे अछि देन हमरो जो नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट हमरो यूपी रे अछि हमरो पाकिस्तान रे अछि बालूचिस्तान रे अछि राजस्थान सांबर लेक रे अछि देन नॉर्थ इंडिया रे इफ यू गो टू कश्मीर रे हमरो दीटा जगह बुरजहोम एंड गुरफ्राल हला बुरजहोम एंड गुरफ्राल ए दीटा जगह रे हमरो मिलिछि एविडेंस सो एटा को टाइम पीरियड इफ यू सी द टाइम पीरियड इज 2500 BC right so if you see northwest ray it is 5000 to 6000 BC it is the starting then Kashmir ray these people they have been there in 2500 BC 2500 BC रे माने कश्मीर को गले सेठी नियोलिथिक स्टार्ट करले सेठी हमु एविडेंस मिले ठीक स्पेशल ठीक फीचर्स तमरा पिट ड्वेलिंग्स गातो खोरी की ता भीतर लोक रहउथिले इफ यू गेस द रीजन कश्मीर रे काई कि पिट ड्वेलिंग्स थिबो कश्मीर बहुत ठंडा राइट इट्स वेरी कोल्ड देयर तो ठंडा लागिवो केमिति ऊपर रहबे तो टिके उषुम हो माने पाया पई से माने गातो खोली की ता भीतर रहउथिले ताकि टिके से माने उषुम लागिवो राइट टिके से एक्सट्रीम कोल्ड निजो बचै परिबे देन ह्यूमन ग्रेव विथ डॉग्स तो हमर एठी मिली छि किछि ग्रेव विथ तांगर पेट डॉग्स ये मिली छि सो दिस इज द सम स्पेसिफिक फीचर्स एवडा सब जनरल फीचर्स थिला हमर इपैक रो देन किछि जागा रे ता टिके स्पेशल फीचर भी थाए जोड़ा हमें आज when हमें पढ़िबा से जागा विषय रे हमें डिस्कस करिबा तो कश्मीर रे तमरो पिट ड्वेलिंग्स हे गला एंड तमरो ह्यूमन ग्रेव रे तांगा डॉग रो स्केलेटन मिलछि तो टिके स्पेसिफिक टिके स्पेशल फीचर हे गला कश्मीर रो देन कमिंग टू ईस्टर्न इंडिया हमरो सेनवार अछि चिरंद अछि छोपानी मांडो अछि तो एटा हमरो मोस्टली बिहार रे तमरो अछि सेनवार चिरंद छोपानी मांडो तो एई जगह रे तुम देखिबो अदि 2016 BC रे मिलिछि राइट सो सी द टाइम गैप 5000 रे मिलिछि हम नॉर्थ वेस्ट रे ईस्टर्न इंडिया को आसिला को इट हैज बिकम 2000 BC लाइक ऑलमोस्ट अ गैप ऑफ 3000 to 4000 इयर्स से माने ईस्टर्न इंडिया को आछंती राइट तो एइटे वर्तमान जतले ईस्टर्न इंडिया को आसिले एइटे हम देखुछु नियोलिथिक रो मिलिछि हम फीचर्स राइट एंड स्पेशली मन रखिबो चिरंद रे बोन टूल्स मिलिछि small bone रो टूल्स मिलिछि टिल नाउ वी वर स्टडीइंग अबाउट स्टोन टूल्स एइटे हमको बोन रो टूल्स भी मिलिछि चिरंद रे देन नॉर्थ ईस्ट रे हमको आसाम रे मिलिछि दियोजाली हाड़िक बोले जगह अछि एइटे अराउंड 2000 BC हमको आसाम रे भी मिलिछि एविडेंसेस ऑफ नियोलिथिक लाइफ पेनिनसुलर इंडिया रे हमको तीनटा फेज रे मिलिछि 2500 बळे 2500 BC बळे ओडे हिल टॉप रे सेमन रहउथिले 1800 BC बळे दे हैव कम टू द फुट हिल्स ऑफ द दोस हिल्स राइट पूर्व ऊपर रहउथिले एई टाइम रे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करेबो तळुक आस्थिले प्लेन्स रे प्रैक्टिस करथिले सो दे वर लिविंग इन द हिल टॉप्स मे बी because of protection from animals and all को डरुथिबे तो हिल टॉप से रहउथिले एंड तळुक आस्थिले प्लेन्स रे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करिया पई राइट ता पर देखिले टिके कन्वीनियंस पई 1800 BC वाले फुट हिल्स को पळे आसिले वर्तमान फुट हिल्स रो प्लेन्स को गले एग्रीकल्चर करिया पई 1100 BC में दे कंप्लीटली went to the plains they started living in the plains ला तो तीनटा फेज रे हमको नियोलिथिक लाइफ रो एविडेंस मिलछि साउथ इंडिया रे starting from 2500 BC to
till 1100 BC. Okay, so if you can see the regional distribution, the pattern, how all over the India, the distribution, the time period is different. Northwest, it was the earliest, it was 5000 to 6000 BC. You go to Kashmir, it is around 2500 BC. Come to Eastern India, it is around 2000 BC. Amara Assam, again, it is 2000 BC. Then if you come to South India, it is like from 2500 BC to 1100 BC. So basically, all over the India, the time period is not fixed. It is varies. It is varying, right? So it is purely based on these communities. Early agriculture and pastoral communities. एमाने को टाइम पीरियड रे को जगह को मूव करचंती सेही जगह रे सेही टाइम रे निलिथिक स्टार्ट हिच सेही जगह रे हमहु सेही टाइम रे हमको निलिथिकेशन एविडेंस मिलिछ राइट सो दिस इज अबाउट द रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन then coming to significance akar kon significance they were the most advanced people of their times anko time ro they were the most modern people they were the most advanced people ei time रे जोडी लोक माने nomadic life lead करछंती hunting and food gathering पे डिपेंड करछंती यार से बोली करी खाया पे डिपेंड करछंती they completely dependent on the nature for their sustenance say time रे ei लोक माने they knew the art of agriculture right so art of advancement kon dakar they were technologically much ahead compared to their counterparts ताकर जे भी contemporaries थिले counterpart थिले तांको कंपैरिजन में बहुत एडवांस थिले they knew agriculture they knew domestication of animals right सेति पे हमें कहूछु they were the pioneers of that time तांको टाइम रे से माने pioneers थिले they were the most advanced people of that time they produced their own food right it was a very big thing they were no more dependent on the mercy of nature they produced their own food advanced tool culture तांको टाइम रे igneous tool जो strong tools थिला igneous stones यूज करथिले तमरो छोट छोट माइक्रोनिक्स यूज करथिले तमरो छोट छोट 3 to 5 centimeter वाला stone यूज करथिले pottery जानिथिले they used pottery as well because they grew their own food से माने खाइबा बनै खाउथिले किमिति खाइबे कि स्टोर करिवे they need pottery for that so for storing they had pottery for eating food they had this pottery तो आकड़े हमरे pottery भी मिलिछि तबर रेड वायर हेगला रेड एंड ब्राउन वायर हेगला तो एई टाइप रा सब pottery आकड़े हमरे मिलिछि Good second. Good second. I'll start it. मोर वॉइस ऑडिबल छी वॉइस ऑडिबल छी हां वॉइस ऑडिबल अच्छा एक ऑडिबल छी वॉइस okay
समस्त वॉइस ऑडिबल राइट एबे क्लियर अछि ना ओके सो लास्ट केते जाय सुनिथिला लाइक टिल केते की थिला हम डिस्कस करथिले सुनिथिला सर पोटेरी पॉटरी विषय रे ओके ओके सो मु जहा कहउथिली सिग्निफिकेंट करो सो ए माने पॉटरी भी यूज करथिले राइट बिकॉज़ दे वर लाइक ग्रोइंग देयर ओन फूड से माने फूड स्टोर करिया पई और तमरो फूड खाइबा पई सो दे वर यूजिंग पॉटरी दे वर एडवांसेस लाइक तमरो किछि जगह रे मेहरगढ़ रे तुमको स्कल सर्जरी मिलिछि हमु ह्यूमन स्कल मिलिछि जोथे कि सर्जरी हिछि राइट सिले हिछि टीथ भितर किछि फील करा हिछि डेंटिस्ट्री सो द न्यू डेंटिस्ट्री स्कल सर्जरी एवले किछि किछि एडवांसमेंट भी देखा जाइछि right so basically if you see all this advancement starting from growing their own food starting from living a settled life starting from using our advanced tool culture dentistry skull surgery so they were like technologically much ahead of their counterparts सही टाइम में तांको जो काउंटरपार्ट्स थिले कंटेम्पररीज थिले तांको टू ये बहुत एडवांस थिले राइट सो ए माने पायनियर थिले तांको टाइम रे पायनियर थिले जो माने गोटे न्यूलिथिक रेवोल्यूशन स्टार्ट करथिले राइट दिस इज द सिग्निफिकेंस सो एंड वी कैन से इन द कंक्लूजन कि एई लोक माने दिस अर्ली एग्रीकल्चर एंड पेस्टोरल कम्युनिटीज दे लेड द फाउंडेशन ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन राइट ए माने तमर इंडस वैली सिविलाइजेशन न फाउंडेशन तार देइथिले राइट हम देखिबा लेटर ए कम्युनिटीज माने परे एग्रीकल्चर सिखियले डोमेस्टिफिकेशन एनिमल्स सिखियले धीरे धीरे से एग्रीकल्चर टा एडवांस हे किरी से माने ट्रेड एंड तमरो इंडस्ट्री डेवलप होबो धीरे धीरे इंडस्ट्री एडवांस हे किरी ट्रेड एंड कॉमर्स डेवलप होबो एंड स्लोली दे विल it will change into urban civilization industrial civilization हमारा धीरे धीरे एई टू ही फाउंडेशन रो ही धीरे धीरे हाउ इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन तमरो स्टार्ट हला माने कि मीन सेटा फ्रॉम ए नोमैडिक लाइफ तापर एग्रीकल्चर सिखिले देन धीरे धीरे इकोनॉमिक ग्रोथ हे कि इंडस्ट्री जानले ट्रेड एंड कॉमर्स जानले एंड देन इट विल बी ए fast urban civilization that we know as industrial civilization right it established hobo right it is communities thile you can remember the names job ketta kuli mundigak right these were the initial tomorrow communities right those who ame taku impact jo kochu these are some of the communities who started the tomorrow neolithic age right and kisi jaga मन रखो आमरी हेगला कोट डीजी हेगला राइट एगुडा को हमें प्रोटो हरप्पन टाइम कहउछु प्रोटो हरप्पन टाउन्स कहउछु को आमरी कोट डीजी आगला सोठी कल्चर राइट वो लिखि दोजी okay so এই जो communities है गले माने they laid the foundation of the industrial civilization and if you name some of these communities माने जोब है गला केटा है गला कुली है गला मुंडिका है गला these were some of the these early agriculture and pastoral communities आउ धीरे धीरे मुझे कहली ए माने एग्रीकल्चर सिखि गले धीरे धीरे नुवा नुवा एग्रीकल्चर स्टार्ट करले तापर धीरे धीरे एग्रीकल्चर टी आउडे बढ़िला सरप्लस हला एग्रीकल्चर सरप्लस आसी गला जेतबले एग्रीकल्चर सरप्लस आसी गला ताकर खाइबा पीबा शॉर्टेज हे गला आउ तांको तांकर सस्टेनेंस पे टेंशन नै खाइबा पीबा तांकर स्टोर कर रखि दैचंती स्लोली दे स्टार्टेड आर्ट एंड क्राफ्ट्स धीरे धीरे आर्ट एंड क्राफ्ट्स इंडस्ट्री आड़े से माने ध्यान देले राइट दे स्टार्टेड तमर मेटल वर्क्स हे गला कारपेंटरी हे गला तमर ब्रॉन्ज स्टैच्यूज हे गला तमर कॉपर वर्क हे गला गोल्ड वर्क हे गला धीरे धीरे ई सब जिंस स्टार्ट करले आर्ट एंड क्राफ्ट्स जहां कि इंडस्ट्री डेवलप हला
आ मन रखो जतबे एग्रीकल्चर डेवलप हेक अछि तमर इंडस्ट्री डेवलप हेक अछि it is the base, it is the foundation for trade and commerce. तो तमर तो एग्रीकल्चर डेवलप हेगला सरप्लस अछि तमर इंडस्ट्री डेवलप हेगला now automatically this will lead to development of trade and commerce. धीरे धीरे तमर ट्रेड एंड कॉमर्स डेवलप होबो राइट. तो स्लोली हम देखिबा एई इम्पैक्ट जतबे तमर एग्रीकल्चर स्टार्ट कर देबे सेटल लाइफ स्टार्ट हे जिवो स्लोली दैट विल डेवलप स्लोली इकोनॉमिक तमर इकोनॉमी आउ डेवलप होबो तमर इंडस्ट्री डेवलप होबो तमर ट्रेड एंड कॉमर्स डेवलप होबो एंड स्लोली इट विल लीड टू प्रोटो हरप्पन कल्चर. ए आमरी कोड डीजी जो हेगला आको हम प्रोटो हरप्पन कल्चर कहउछु. आको प्रोटो हरप्पन कल्चरल टाउन कहउछु हम हैला ए आमरी कोड डीजी हो. तो आमरी कोड डीजी सोठी कल्चर जो है राजस्थान रे एटा हम प्रोटो हरप्पन कल्चर कहउछु राइट बिकॉज़ एटा ना कंप्लीट हरप्पन कल्चर वाला नहीं माने कंप्लीटली एडवांस नहीं मझी मझी अछि. ये अर्ली कम्युनिटीज माने जो धीरे धीरे इकोनॉमिक डेवलपमेंट कले धीरे धीरे स्मॉल टाउन्स आसीगला है बड़े आमरी कोड डीजी सोठी इन राजस्थान एवना कल्चर डेवलप हेगला धीरे धीरे सेटा आउरी डेवलप हेई गिरी हमरो 2500 बीसी बेलू को हमर इंडस वैली सिविलाइजेशन डेवलप होला राइट. टिके खाली मारो गोटे खाली कहि दउची टिके हम स्क्रीन देखा होची. यस सर. तो प्रथम हंटिंग एंड फूड गैदरिंग थिला राइट. देन जतले इपैक माने आसी गले एठे आसी गला हमर तमरा pastoral life and तमरा एग्रीकल्चर राइट. ए इपैक जतले आसी गले राइट माने जो टाइम पीरियड रे हमर 5000 की 6000 बीसी बेलू आसी गले धीरे धीरे pastoral एग्रीकल्चर लाइफ डेवलप हे गला राइट. धीरे धीरे तमर कोन हैला एग्रीकल्चर सरप्लस आसिला जब एग्रीकल्चर सरप्लस आसिला आपे आपे तमरा आर्ट एंड क्राफ्ट्स लोक माने डेवलप करले राइट. ताकर खाइबा पीबा टेंशन रहिला नि स्लोली से माने क्रिएटिव साइड गले आर्ट एंड क्राफ्ट्स डेवलप होला. आर्ट एंड क्राफ्ट्स डेवलप होला इट विल लीड टू डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री डेवलप होला. इंडस्ट्री आ एग्रीकल्चर तो डेवलप हेला एग्रीकल्चर डेवलप हेला एंड तमरा इंडस्ट्री डेवलप हेला आपे आपे तमरा ट्रेड एंड कॉमर्स डेवलप होबो राइट. स्लोली दिस डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इन इंडस्ट्री डेवलपमेंट इन ट्रेड एंड कॉमर्स तो एगुडा को तमरा माने तमरा एग्रीकल्चर इंडस्ट्री एंड ट्रेड एंड कॉमर्स डेवलप होबो स्लोली इट विल लीड टू योर अर्बन लाइफ राइट. तो इथे हमको प्रोटो हरप्पन टाउन्स आसी जीवो. सो दिस इज अराउंड तमरा 4000 बीसी बेलू राइट. 4000 बीसी बेलू हमर प्रोटो हरप्पन टाउन्स आसी जीवो राइट. ए जो हमर 5000 की 6000 बीसी रो जो एग्रीकल्चर रे हमर डेवलपमेंट चलथिला धीरे धीरे सेटा पास ऑन हे गला इंडस्ट्री को तापर एग्रीकल्चर इंडस्ट्री जो डेवलपमेंट चलतला सेही इंपल्स ता वर्तमान ट्रेड एंड कॉमर्स को पास हे गला. 1000 वर्ष परे 1000 की 2000 वर्ष रो ए डेवलपमेंट इकोनॉमी डेवलपमेंट परे तमरा प्रोटो हरप्पन टाउन्स डेवलप हैला लाइक तमरा जोडा कहउथिली आमरी हे गला कोट डीजी हे गला हमर सोठी कल्चर हे गला ए सोडा डेवलप हैला राइट. एई जो प्रोटो हरप्पन टाउन हे गला ए माने अराउंड 2500 बीसी बळे they became urban civilization completely urban civilization हे गला that we known as Harappan civilization or Indus Valley civilization. if जिनसरा फ्लोडा बुझी गेला तमरा पैलियोलिथिक टाइम रे हंटिंग फूड गैदरिंग थिला धीरे धीरे तमरा जेतले अर्ली एग्रीकल्चर एंड पैस्टोरल कम्युनिटीज आसिले तमरा they developed agriculture they developed domestication of animals economic की ग्रोथ हैला
वर्तमान धीरे धीरे एग्रीकल्चर टा आहुरी ग्रो हेई एग्रीकल्चर सरप्लस आसी गला आम पाखरे एग्रीकल्चर सरप्लस आसी गला तो एग्रीकल्चर सरप्लस आसिले हमर खाइबा पीबा टेंशन नै आमे धीरे धीरे आर्ट एंड क्राफ्ट आडू ध्यान देले आर्ट एंड क्राफ्ट तो बढ़िला इंडस्ट्री डेवलप हो गला जेतले एग्रीकल्चर इंडस्ट्री डेवलप हो गला से माने पुश करले तमरा ट्रेड एंड कॉमर्स को डेवलप हो गला राइट एंड दिस डेवलपमेंट इन ऑल द थ्री सेक्टर्स your primary sector, your secondary sector, and your tertiary sector, it led to urbanization. Urbanization हम कितना को हुए? What is the definition of urbanization? The number of people working in secondary and tertiary activities is more than the number of people working in primary activities. The number of people working in industry and number of trade and commerce, they are more than the number of people working in agriculture. आमे सेतबेले को सेटा एक अर्बन एरिया हे गला से एरिया का हला तो 4000 बीसी बेलू को आमे कहूछु प्रोटो अर्बन माने प्रोटो हरप्पन टाउन्स माने इंडस वैली सिविलाइजेशन जस्ट पूर्व फेज टा इमीडिएटली पूर्व फेज टा राइट तो एठी भी अर्बन हे गलानी धीरे धीरे बट इट इज नॉट कंप्लीटली एज अर्बन एज द इंडस वैली सिविलाइजेशन राइट तो एटे प्रोटो हरप्पन वाला फेज अछि देन से डेवलपमेंट कंटिन्यू हे करी 2500 वाले we reach the mature phase of the Indus Valley civilization, right? It have tomorrow urban civilization हम कहूँ Indus Valley civilization or Harappan civilization. It is the mature phase we are talking about. 2500 BC वाले. If somebody asks you, जोड़ा our initial phase टा कोड़ा? Our initial phase टा है Proto Harappan phase टा. 4000 BC जो Proto Harappan phase थिला, that is the initial phase of the Indus Valley civilization. What we study about generally आमे जोड़ा पढ़ू history रे we study about the mature phase because early phase रो बेसी evidence नहीं आम पाखरे early phase of the Indus Valley civilization बेसी evidence नहीं तो आमे जहाँ भी जानू जहाँ भी पढ़ू we talk about the mature phase of the Indus Valley civilization, right? So this is about this question early agricultural and pastoral communities, right? Simple बेसी लिखिबार नहीं हमको प्रथम इंट्रोडक्शन डिफाइन करिवार अछि ए कम्युनिटीज किए देन ताकर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स तक कहिबार अछि एई फीचर रु आमे ताकू डिस्टिंग्विश कर परिबा राइट जो जो जगह रे एई वाला फीचर मिलिछि आमे कहि परिबा सेही जगह रे कम्युनिटीज माने थिले एंड से माने नियोलिथिक लाइफ स्टार्ट करथिले तापर तंग हम रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस कर परिबा ईस्टर्न इंडिया साउथ इंडिया Assam, like all these things we can discuss. Then we can discuss about the significance, how they were significant, how they were quite advanced compared to their counterparts or compared to their peers. Then all the jagah peers thile, taku de mane kimite advanced thile. We can discuss about those, right? And then gote choto map debi ame chaile darkar nahi jodi if it is a 60 marks question you can add. If it is a 20 mark questions, time अच्छी कर परिवा or it is mandatory नहीं, right? So there is if you got a map करेंगे we can show the all these proto Harappan areas, right? हमें बड़ा जोड़ा हम discuss कर ले all these areas we can show and सब बड़े figure रे तोड़े annotate करिवो तोड़े लिखिवो कि figure 1 different early pastoral and agricultural community sites in India, different epoch sites in India. Right? Kichi doubt a question re? Anybody any doubt? Will or else we'll proceed to the next question. कार किसी doubt अच्छी? कार किसी doubt अच्छी? Clear? Okay. तो हमें next question को जीवा. Now we'll discuss about tomorrow the theories of origin and decline of the Indus Valley civilization. Right? What are the different theories of origin and decline of Indus Valley civilization? Okay, so basically introduction में एक question ना
or in fact any question about Indus Valley civilization, prepare a generic introduction. So generic introduction prepare kar dabo. Like for example, I have few pointers. It was discovered in 1920s, right? By tomorrow, Dayaram Sahani tomorrow discover karthile 1921 रे, right? And then it was the oldest and the greatest civilization, right? এই টাইমে তোমার মেসোপটেমিয়ান civilization ଥିଲା, Egyptian civilization ଥିଲା, Chinese civilization ଥିଲା, but this was one of the greatest civilization. ସେଇ ଟାଇମର compared to its जो तार contemporary जे थिले civilizations, ताकटू ये बहुत माने advanced थिला in terms of the urbanization, right? बहुत highlight माने urbanization टा उडे next level थिला, right? So it was the oldest and the greatest civilization ताका टाइम रा. उडे extensive civilization थिला, 1.3 square million kilometers, 1400 settlements, and it flourished for more than 1000 years. उडे around 2800 BC ରୁ start ହେଇକି यार mature phase ଟା 1800 BC तक, 1800 BC decline ହେଲା. So from 2800 BC till 1800 BC, 1000 years of evolution thila, 1000 years of flourish ହେଇଥିଲା ଏଇଟା, right? So ଏଗୁଡା କିଛି generic points ଅଛି, you can write. Basically आ ପୂର୍ବରୁ ନା they didn't knew about Indus Valley civilization. आ ପୂର୍ବରୁ they started from Mauryan time, right? The history of India, the historians knew from the Mauryan times. Indus Valley civilization time ମାନେ period ଜାଣି ନଥିଲେ. So ଯେତେବେଳେ ଏଇ discovery ଟା ହେଲା, historian ମାନେ ଜାଣିଲେ about Indus Valley civilization ଅଛି India ରେ, it pushed the Indian history back by 2000 years, right? ଏଇଟା ବହୁତ ଥର OPSC ରେ UPSC statement ରେ question ଟା ପଡିଛି, like indirectly ପଚାରିଛି କି the discovery of Indus Valley civilization pushed the Indian history by 2000 years, right? So comment on this. So basically it is talking about this Indus Valley civilization विषय. So you have to discuss about Indus Valley civilization, our political, social, religious life विषय discuss करेगा अच्छी. Okay, so these are some of the generic points. तो तुम्हें ये generic prepare कर रखे दबा. So I discuss that you can use anywhere in this जैसे question तुम्हारा IBC पर पच्चेरेगा. Okay. अच्छा. So now regarding the origin of the Indus Valley civilization, there is a big controversy. Different historians माने different तांकरा opinion देइचंदी regarding the origin of the Indus Valley civilization. कौन पे एमिति हेइछि? The major reason is हमरा ए starting phase, initial phase of the Indus Valley civilization विषय हमरा बहुत कम evidence अछि. हमें जहाँ भी Indus Valley civilization विषय जानिछु, it is regarding the mature phase. ହେଲା early phase विषय हमरा बहुत ही कम evidence अछि. ହେଲା किछि किछि मेजर होला कल्चरल एविडेंस, पॉटरी वगैरह अछि, ହେଲା ताकू छाडी कि हमरा सिमिति मेजर किछि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस नाही. किछि किछि एमिति random अछि, but there is not many archaeological evidences regarding the early phase except some pottery, right? सेति में जेतु बहुत कम एविडेंस अछि, तो historians में different view देथिले. एवला स्टार्ट होला because of this reason or evidence माने origin हला, right? So सेति में टिके controversy अछि, टिके doubt अछि कि what is the correct theory. ठीक अछि. अच्छा आउट रीजन हला काहे कि एते जानि नै फीचर ए विषय रे आउ जति के एक्सकैवेशन हेइ छै ना, सबुडा का एक्सकैवेशन गोटा सेकंड मुडे स्क्रीन शेयर करछि. गोटा सेकंड मो स्क्रीन देख परछो कि कैन यू see the screen, phone screen टा देख परछो कि देख परछो? Yes, sir. Okay. So what I was talking is तमरो जो एक्सकैवेशन माने करूथिले, so it was basically horizontal excavation माने so different जगह रे से माने गोटे लेयर रे एक्सकैवेशन करथिले.
ହେଲା ଖୋଳି 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 ଯାଉଥିଲେ ଦେଖୁଥିଲେ କଣ କଣ ଏଭିଡେନ୍ସ ଅଛି କଣ କଣ ମିଳିଛି ତାକୁ କାର୍ବନ ଡେଟିଂ କରିକି टाइम पीरियड टा पता करथिले जहां पॉटरी मिलिची कि जहां सील्स मिलला जहां स्टैच्यूज मिलला कार्बन डेटिंग करथिले दिस इज नोन एज हॉरिजॉन्टल एक्सकवेशन बट आमु जदि कि आमे फर्स्ट लेयर रे जदि देखिबा वी विल ऑलवेज गेट अबाउट द लेटेस्ट पीरियड ହେଲା ଆମେ आ ପରେ ଆଉ ଲେୟାର ଥିବ 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 ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଭର୍ଟିକାଲ ଏକ୍ସକାଭେସନ ନ କରିଛେ ଏଇଭଳିଆ ନ ଖୋଳିଛେ ଭର୍ଟିକାଲ ଏକ୍ସକାଭେସନ ନ କରିଛେ ଆମେ କେବେ ବି କହିପାରିବାନି କି ଇନିशियल ଫେଜ ରେ କଣ ହେଇଛି ବିକଜ ଯୋଉ ଇନିशियल ଫେଜ ଅଫ ଦ ଆଇବିସି ଥିବ ସେ ସବୁଠୁ ତଳେ ଥିବ ତା ଏଭିଡେନ୍ସ ଟା ଗୋଟେ ଇନିशियल ଫେଜ ର ଏଭିଡେନ୍ସ ଥିବ ସବୁଠୁ ତଳେ ଥିବ ଯେବେ ତକ ଆମେ ଭର୍ଟିକାଲ ଏକ୍ସକାଭେସନ ନ କରିବା ଖୋଳି 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 ତଳେ ତକ ନ ଯିବା ଆମେ ସେବେ ତକ ଇନିशियल ଫେଜ ର କିଛି ଏଭିଡେନ୍ସ ପାଇବା ନାହିଁ ତ ଆମର ଯୋଉ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା वन ऑफ द मेजर ड्रॉबैक ହେଲା ଯୋଉ ଏକ୍ସକାଭେସନ ହେଇଛି इट हैज फोकस्ड ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सकवेशन किंतु डिफरेंट एरिया में एक्सकवेशन करि परिबे इट नेवर फोकस्ड इन द वर्टिकल एक्सकवेशन द वर्टिकल एक्सकवेशन हे थांदा ताहले माने मे बी जो अर्ली पीरियड रे माने किछि जानि परथनते तो एटा गोटे रीजन हेला Okay. So this was it. So basically यही सब रीजन जो को जेहेतु आमर अर्ली पीरियड रो बहुत कम एविडेंस अछि राइट काहे कि आमर काहे कम एविडेंस अछि काहे कि आमर वर्टिकल एक्सकवेशन बेसी करा जाय नहीं अब बहुत सारा साइट्स आमर बिकॉज ऑफ फ्लड एंड ऑल से माने वर्तमान सबमर्ज हे छै टॉपिक भीतर राइट लाइक मोहनजोदारो राइट बहुत सारा इटे छात तरह फ्लड हिची बहुत सारा साइट्स तमे वर्तमान नाउ दे आर अंडर वाटर right so because of all these reasons we don't have much evidence about the early phase bearing few potteries right सेहिति पय जेहेतु बेसी हमर प्रूफ नाही तो हिस्टोरियन माने जहां कहउछन हमें मानियो बाध्य राइट सेवन डिफरेंट थ्योरीज ताकर परसेप्शन हिसाब रे डिफरेंट थ्योरीज दैछन्ती प्रथम थ्योरी ला थ्योरी ऑफ सडन ओरिजिन और फॉरेन ओरिजिन तो ये थ्योरी कोन कहले तो ये थ्योरी बेसिकली तमरो मोर टाइमर जॉन मार्शल हे गले मोर टाइमर व्हीलर हे गले गॉर्डन चिल्डे हे गले तो ए तीन जन तमरो गॉर्डन तमरो चाइल्ड हे गले तमरो मोर टाइमर व्हीलर हे गले जॉन मार्शल हे गले ए माने थ्योरी दिचंती तो बेसिकली थ्योरी रो बेस टा कोन हमर जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन थिला कंटेम्परेरी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन सी किछि इट वाज अर्लियर देन द आईबीसी तार टाइम पीरियड टा इंडस वैली सिविलाइजेशन पूर्व तो एमाने कोन कहले कि से मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन लोक तो अर्बन सिविलाइजेशन थिला हेडा तो से माने इंडिया को आसिले माइग्रेट करके इंडिया को आसिले आको थ्योरी ऑफ माइग्रेशन भी कहते हला तो से माने माइग्रेशन करके इंडिया को आसिले दे न्यू अबाउट अर्बनाइजेशन से माने जानि थिले किमिति अर्बनाइजेशन हुए तो से माने बहुत कम टाइम दम लागिला से माने आसी इंडिया रे सब डेवलप कर देले कंप्लीट अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर से ठिया कर देले राइट तो it was because of this it was known as sudden or foreign origin right एमाने आसिले मात्र 500 वर्ष भितरे इंडिया रे तमरो पूरा टाउन प्लानिंग करी करी तमरो ड्रेनेज सैनिटेशन पूरा एडवांस्ड पूरा तमरो अर्बनाइजेशन करी करी रेडी कर देले सो अकॉर्डिंग टू देम एही मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन लोक आसी के एसो करछन ठीक अछि तार आर एविडेंस रे कोन कहले आर एविडेंस रे कहले पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन लोक भी पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट यूज करछन्ती मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन लोक भी पिक्टोरियल स्क्रिप्ट यूज करथिले राइट अच्छा ऑडिबल अछि मोर ना वॉइस ऑडिबल ना कटि गला इज इट ऑडिबल Yes, sir. okay
तो पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट हेगला तो एमाने कहले कि प्रथम इंडस वैली सिविलाइजेशन लोक पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट यूज करछन्ती मेसोपोटामियम वाला भी पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट यूज करछन्ती दी जणा को बॉन्ड ब्रिक्स यूज करछन्ती राइट तो मतलब सो बिल्डिंग हेगला कि रोड्स हेगला इंफ्रास्ट्रक्चर हेगला सब दी जणा को बॉन्ड ब्रिक्स यूज करछन्ती दी जणा को अर्बन लाइफ जेति कि सब अर्बन लाइफ फीचर्स हेगला राइट दी जणा को थिला दी जणा को टाउन प्लानिंग थिला दी जणा को पक्का घर थिला राइट सैनिटेशन थिला जो जहां जहां अर्बन एमिनिटीज था दी जणा थिला पॉटरी दी जणा पॉटरी यूज करथिले सील्स दी जणा को सील्स यूज करथिले राइट हमरो जो स्टिटाइट जो बहुत सारा सील्स इन स्पेसिफिकेशन मिली तो दी जणा सिविलाइजेशन सील्स यूज करथिले दी जणा एक दूसरे कंटेम्पररी थिले सेम टाइम रे फ्लोरिश थिले दी जणा ब्रॉन्ज यूज करथिले so these were the very like various evidences put forward by the historians to say that ki jo Indus Valley civilization started it was started by these people of the Mesopotamian civilization semane astile semane start kale but ako jodi ame critically analyze kariba we will see that this is not true let's see kahi ki Harappan civilization was planned Mesopotamian civilization was haphazard. Harappan civilization में जो urban planning was excellent. Grid pattern में road meet करिवे. Like there will be a north to south बड़ा road रहेगा. There will be small lanes, you know, all touching the main road at right angle. Right? तमरा main road रहेगा north to south. Then there will be small roads that will be touching the main road at right angles. तो ए भलिया घर उडा सब एट रहइबो 8 से घर रहइबो तो आको ग्रिड पैटर्न कोनती नॉर्थ टू साउथ रे तुम रोड रन करिवो मेन रोड बाई लेन्स उडा तुम एबला लेन्स उडा टच करिवे तो वेरी वेल प्लान sanitation underground sanitation थिला माने कवर्ड ड्रेनेज फ्लश टॉयलेट यूज करथिले राइट जो टॉयलेट थिला एकर पानी ढाली की ड्रेनेज फ्लश टॉयलेट यूज करथिले इंस्पेक्शन होल्स हेगला स्टॉर्म वाटर ड्रेन हेगला तमरा सोक पिट्स हेगला एक्सीलेंट टाउन प्लानिंग राइट दे वर द एक्सीलेंट टाउन प्लानिंग तंगोला थिला इत्ते हाई लेवल ऑफ टाउन प्लानिंग तमर मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन नथिला इट वाज हैपेजेड इट वाज अर्बन सिविलाइजेशन but the level of urbanization was not as that much as the Harappan or the Indus Valley civilization. Both of them used pictographic scripts, yes, but the Indus Valley civilization 396 characters achi. The Mesopotamian civilization 900 characters achi. So it was different scripts. Janakar 396 hela logo. Janakar 900. राइट तो सेम हेले काहेकी यदि सेम लोक करथांते सेम जिंसो से माने प्रपोज करथांते जदि मु मेसोपोटामियन वाला तले मु इंडस वैली आसी के नंबर ऑफ लेटर के कमे देली सेही 900 कैरेक्टर होई थाता तापरे हरप्पन जो पिक्टोग्राफिक साइन अछि इट इज डिफरेंट इट हैज बीन डेसिफर्ड तो सॉरी तमरो जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन जो स्क्रिप्ट अछि इट हैज बीन डेसिफर्ड राइट ताकू डिकोड करा हे जाईछि किंतु हमरा हरप्पन सिविलाइजेशन में जो पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट अछि ताको आजि जाई डेसिफर करा हे पारी नाही सेरा ओडे पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट चित्र विचित्र हेतिबो ताको बोस्टोफेडन कोंती राइट टू लेफ्ट लिखा जाए हला फर्स्ट लाइन का तमरा लेफ्ट टू राइट देन नेक्स्ट लाइन उडा तमरा राइट टू लेफ्ट ताको बोस्टोफेडन कोंती राइट both of them use seals Harappan वाला भी seals यूज करथिले मेसोपोटामियन वाला भी seals यूज करथिले इन दुइटा seals डिफरेंट थिला Harappan वाला का seals क्वाड्रिलेटरल थिला ए बढिया मेसोपोटामियन वाला का seals सिलिंड्रिकल थिला ए बढिया ए तो दुइटा seals वे डिफरेंट दुइटा पॉटरीज भी डिफरेंट थिला ब्रिक्स यूज दुइटा करथिले किंतु Harappan वाला बहुत बड़ स्केल रे ब्रिक्स यूज करथिले बहुत बड़ स्केल रे रोड से गला ग्रेट बाथ है गला घर है गला बहुत ही वाइड स्केल रे यूज करथिले both of them use bronze yes both of them use bronze but Harappan civilization of bronze बहुत inferior quality थिला
Harappan civilization जो bronze थिला, it was very inferior quality compared to your Mesopotamian civilization. So all these points shows us that it was not the work of the same group of people. The same group of people रहिथान्ते सेमाने एका ए समिंस एका रहिथान्ता. तो एटा हमें खारिज कर दवा. Right? Then theory of Aryan origin. Theory of Aryan origin देखिले तमरा राव हे रामचंद्रन हे गले, तमरा शास्त्री हे गले, केएन शास्त्री हे गले, right? होसलकर हे गले, राव हे गले. So these were like some of the Indian nationalist historians, those who were given the Aryan origin. एमाने कहउतले जो वैदिक आर्यंस अछंती, वैदिक आर्यंस ए वैदिक आर्यंस माने ही तमरा इंडस वैली सिविलाइजेशन को एस्टैब्लिश करछंती. सेमाने कहउतले दि जणा सेम लोक. से वैदिक आर्यंस भी तमरा इंडस वैली सिविलाइजेशन को एस्टैब्लिश करछंती. तापे से पॉइंट देथिले कोन कहिथिले दि जणा सेम ज्योग्राफिक एरिया. यस आमे देखिचे तमरा इंडिया रा मोस्टली नॉर्थ वेस्ट पार्ट ता तमरा इंडस वैली सिविलाइजेशन हेतिला. एई नॉर्थ वेस्ट पार्ट ता तमरा वैदिक एज रो अर्ली वैदिक एज रो स्टार्टिंग पॉइंट ता. एई तमरा इंडस वैली सिविलाइजेशन भी तमरा लोक रहउथिले, ताको एरिया थिला. एटा तमरा ऋग वैदिक एज और अर्ली वैदिक पीरियड हम कहउछु. अर्ली वैदिक पीरियड ता भी सेम जगह. तो माने कहउतले सेम ज्योग्राफिकल एरिया दीटा आगो. यस किछि किछि जो सेटलमेंट रे दीटा आगर एविडेंस हम मिलिछि. लाइक किछि किछि सेटलमेंट्स लाइक भगवानपुरा जोटा कि तमरो इनि तमरो आईबीसी रो भी एविडेंस मिलिछि, तमरो वैदिक एज रे एविडेंस मिलिछि. बोथ प्रैक्टिस एग्रीकल्चर. यस बोथ न्यू एग्रीकल्चर. ट्रू. बोथ वर्शिप फायर. यस आईबीसी लोक भी फायर वर्शिप करथिले. तमरो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो सॉरी वैदिक एज लोक भी तमरो अग्नि गॉड को पूजा करथिले. सो बोथ ऑफ देम वर्शिप फायर. Both did animal worship. Yes, true. Both worship nature. Correct. Right? तो तमरो किछि किछि एई वाला जो कल्चरल एविडेंस थिला, किछि किछि हमरो जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस थिला, ए बेसिस रे से माने कहिथिले कि it is the same group of people. But again जब हम critically analyze करिवा, it is not true. For example, basic difference. तमर जो हरप्पन civilization थिला, it was a nomadic life, settled life नथिला. तमरा वैदिक आर्यंस they led a settled life. Oh my bad. उल्टा लिखा है. Okay, उल्टा लिखा है. Sorry. तमरा हरप्पन civilization हला settled life. Right? Urban life थिला, settled life थिला हरप्पन civilization. वैदिक आर्यंस they led a nomadic life. आमे जदि अर्ली वैदिक पीरियड देखिबा, early Vedic period re again they started from nomadic life, right? Amara 2500 BC ru 1800 BC जोड़ा amara Indus Valley civilization thila, it was an urban life, it was a settled life, urban life. पुणी जेतबे 1500 BC ru amara start hela amara Vedic age, again nomadic life start hela. So this is the basic, very basic difference. The Harappan civilization or Indus Valley civilization was urban, settled. Vedic age was early Vedic period was a nomadic life. It was a rural life, right? Complete Vedic period, early ho ki tomar later Vedic period ho, it was rural life. It was not an urban period. It was a rural life. So tomara Harappan culture la urban, Vedic culture la completely rural. Harappan civilization tomara secondary or tertiary activity dominant thila. तमरा इंडस्ट्री हेगला, तमरा जो इंडस्ट्री हेगला, तमरा ट्रेड एंड कॉमर्स हेगला डोमिनेंट थिला. वैदिक टाइम रे तमरा इट वाज अगेन पैस्टोरल एंड एग्रीकल्चरल, राइट? इवन अर्ली वैदिक पीरियड में एग्रीकल्चर भी सीखि नथिबे. तो अगेन दिस द इकोनॉमी वाज कंप्लीटली डिफरेंट, राइट? एडी इकोनॉमी तमरा पैस्टोरल एंड एग्रीकल्चर हेला लगो, एडी तमरा इंडस्ट्री एंड तमरा लाइक ट्रेड एंड कॉमर्स डेवलप्ड अछि. Yes, both of them knew script. Okay, sorry. तमरा जो वैदिक पीरियड है गला, हरप्पन पीरियड है गला, they knew script. Though it is not deciphered, but they knew script. वैदिक आर्यंस माने आप देखिबा दे. Early Vedic period especially, they didn't know script.
it was transmitted orally जोटा हमें श्रुति लिटरेचर कहूँ श्रुति हमें कहूँ ना श्रुति लिटरेचर तो जोटा हमारा वैदिक पीरियड जो लिटरेचर थिला it was not written there was no script it was transmitted orally right तो देखो वैदिक हरप्पन पीरियड से माने जानी चंदी स्क्रिप्ट एडी स्क्रिप्ट जानना थी तो सेम लोग तो है ही नथिबे राइट इवन द नेचर ऑफ वर्शिप हरप्पन सिविलाइजेशन गुडा फालस वर्शिपर्स थिले फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट राइट योनि वर्शिप करथिले फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट वर्शिप करथिले हरप्पन सिविलाइजेशन मोस्टली एनिमल्स लाइक बुल्स वर्शिप करथिले वैदिक आर्यंस माने काउज वर्शिप करथिले राइट अगेन देयर इज दिस फंडामेंटल डिफरेंस इन रिलीजियस प्रैक्टिस ठीक है सो ऑल दिस इफ यू सी देयर द वे अगर पॉलिटिकल लाइफ तुम देखिबो जदी नोमैडिक लाइफ की सेटल लाइफ हे गला रूरल लाइफ को अर्बन लाइफ हे गला ताकर इकोनॉमिक एक्टिविटीज तुम देखिबो ताकर रिलीजियस लाइफ देखिबो these were completely fundamentally different two different right गांव ताके केबे भी कोई परिवानी कि both were the same set of people again it was rejected. Then finally the theory of gradual origin this is the most accepted theory it is given by तुम्हारा रफीक हे गला फेयर सर्विस हे गला घोष हे गला आउट मुगल लिखि दियो मुगल हला तुम्हारा मुगल हिस्टोरियंस लाइक मुगल घोष रफीक फेयर सर्विस एमाने थ्योरी देथिले ए थ्योरी कोन कहले एमाने आको कोआ जातला ग्रेजुअल ओरिजिन और इंडिजिनियस ओरिजिन आको कोआ जातला ग्रेजुअल और तमर इंडिजिनियस ओरिजिन माने को फॉरेन ओरिजिन नहीं हमरो निजो नेटिव लोक ही आको एस्टैब्लिश करथिले तो इट इज ग्रेजुअल ओरिजिन और तमरा इंडिजिनियस ओरिजिन सो एटा तमर देथिले घोष हे गले हिस्टोरियंस लाइक घोष रफीक तमरा मुगल फेयर सर्विस एमन सो तमरा देथिले थ्योरीटा तो ये कोन कहउथला जो दूसरा हमें पढ़ी थिले जो बेसिकली हमें कोन पढ़ी थिले तमर जो इंपैक्ट थिले अर्ली एग्रीकल्चर एंड पेस्टोरल कम्युनिटीज कोर्स अच्छा ठीक है समझे जोटा हमें पढ़ी थिले कि एई अर्ली एग्रीकल्चर एंड पेस्टोरल कम्युनिटीज एमाने धीरे धीरे आकर जो एग्रीकल्चर माने आउट ट्रेड एंड कॉमर्स तमरो आकर ड्यू टू ग्रोथ इन तमर एग्रीकल्चर बढ़ला इंडस्ट्री एक्सपैंड करला तमरो ट्रेड एंड कॉमर्स एक्सपैंड करला आज को धीरे धीरे तमर प्रोटो हरप्पन टाउन पळे आसीबो सेही प्रोटो हरप्पन फेज आउ 1000 वर्षर तमरो 1500 वर्षर तमरो इकोनॉमिक प्रोग्रेस परे तमरो इंडस वैली सिविलाइजेशन हे जीवो तो इंडस वैली सिविलाइजेशन रो तम देखिबो आरो मेन कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स ला तीनटा the balance between your agricultural surplus तमरो इंडस्ट्री जो ग्रोथ होची ट्रेड एंड कॉमर्स जो ग्रोथ होची ए तीनटार जो फाइन बैलेंस अछि राइट ए तीनटार जो फाइन बैलेंस अछि हमरो गोटे जगह तुम्हारा एग्रीकल्चर गोटे जगह तुम्हारा इंडस्ट्री गोटे जगह तुम्हारा ट्रेड एंड कॉमर्स ये तीनटार जो फाइन बैलेंस हमरो लीड कला इंडस वैली सिविलाइजेशन को जो अर्बन लाइफ हमें कहूचु कि अर्बन सिविलाइजेशन दिस अर्बन सिविलाइजेशन इज नथिंग बट द culmination of these three factors growth in agriculture growth in industry growth in trade and commerce ये तीनटा तमो जो ग्रोथ हला ता जो तमरो इंडस्ट्री सिविलाइजेशन अर्बन सिविलाइजेशन हला सो बेसिकली एटा न पॉजिटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड थिला हमरो बैलेंस ऑफ ट्रेड बुझ परछो कोन पॉजिटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड तमज तबले एक्सपोर्ट
is greater than import आमे से को पॉजिटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड हैला तमरा एक्सपोर्ट जोडा इंपोर्ट टू अधिक हैला तो आमको सेति में पॉजिटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड कहूछु आमे एक्सपोर्ट करथुलु कोन एग्रीकल्चर वाला प्रोड्यूस किछि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हे गला किछि आर्ट एंड क्राफ्ट्स हे गला जो आमे कारपेंटरी काम करथुलु कि सिल्वर स्प्रिंग ब्रॉन्ज रो किछि स्टैच्यू बनौथुलु सेबला किछि आमे एक्सपोर्ट करथुलु बदल रे कोन पाउथुलु बदल प्रीशियस स्टोन्स गोल्ड प्रीशियस स्टोन्स हे गला गोल्ड हे गला प्रीशियस स्टोन्स लाइक तमरा एजेट जैस्पर कैल्सिडोनी राइट लैपिस लाजुली ला एजेट हे गला जैस्पर हे गला कैल्सिडोनी हे गला लैपिस लाजुली हे गला एमे प्रीशियस स्टोन्स आस्तुला गोल्ड आस्तुला राइट आ बदल रे आप दोथुलु कोन एक्सपोर्ट करथुलु हम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हेगला यार धान चावल दोछ शेयर पाउछ सुना तमरा प्रीशियस स्टोन्स हेगला पॉजिटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड प्रॉफिटेबल ट्रेड पूरा मोर मु यार एग्रीकल्चर प्रोड्यूस देबी शेयर पूरा मालामाल हे जिबी मोर जो सेइटो इंपोर्ट करि जो आनिबी राइट सो एई सब जिंस जोगु हमर बहुत पॉजिटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड हैला एंड ऑलवेज रिमेंबर जो तुम सेकेंडरी और टर्शियरी एक्टिविटीज ग्रो करिवो सेतबेला हमर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी बड़ी जीवो हैला तो सेति पई 2500 बीसी वाले हमर जो मैच्योर फेज कहूछु all these three activities agriculture हे गला industry हे गला trade and commerce they were at their peaks and 2500 BC वाले we had this Indus Valley civilization Harappan civilization that is the mature phase that is the सबुटु तर peak of urbanization थिला right so this is the gradual evolution theory हैला तो this is about the theory of gradual evolution gradually तमरा ए जो तमरा जो प्रोटो हरप्पन कल्चर थिला ए प्रोटो हरप्पन कल्चर तमरा जब कहउथली प्रोटो हरप्पन कल्चर ये धीरे धीरे पॉपुलेशन बड़ी करी ये इकोनॉमी यार ग्रो हे करी तमरा सिटीज लाइक हरप्पा मोहनजोदारो दोस वर द मेट्रोपॉलिटन टाउन्स ऑफ दोस टाइम्स 30000 40000 पॉपुलेशन थिला अंकर सेही टाइम रो मेट्रोपॉलिटन सिटीज थिला एडा राइट ग्रेजुअली इट रीच्ड दैट स्टेज ओके ठीक है सर मैं इतने एंड कर दूँगा okay any doubt you can ask me any doubt you can ask me I think काफी टाइम है ready so we will end the class so next class we will continue with the other questions okay so any doubt in group sir our decline of IBC टा sir पढ़ा बनी की नेक्स्ट क्लास से कर दो लेट हो गया ना नेक्स्ट क्लास में हमें डिक्लाइन पार्ट डिस्कस कर दो एंड देन ऑल आउट हम डिस्कस करिबा ओके सर ओके थैंक यू सर सो ठीक है तो जो माने खाली जस्ट गोटे अनाउंसमेंट कर दोची सो वी विल हैव दिस क्लासेस वी विल हैव दिस टेस्ट सब सैटरडे टेस्ट रहइबो राइट सो तमे टेस्ट लिखो ताको इवैल्यूएशन करिकरी मु मो फीडबैक तमु देबी अपार्ट फ्रॉम दैट आमे से वीक रे आमे जति की टॉपिक हमर क्वेश्चंस आसी छी सबुडा क्वेश्चंस हम डिस्कस कर दबा क्लास रे राइट मु तुम मटेरियल दे देबी जहां मटेरियल दरकार पीपीटीस हे गला पीडीएफ हे गला आई विल गिव यू ऑल द मटेरियल्स दैट यू नीड फॉर आंसर राइटिंग वी विल डिस्कस द आंसर्स इन क्लास राइट तुम बस आंसर लिखे रही फीडबैक नंबर अछि इवैल्यूएट करि रही तो दिस इज द थिंग तो एई बडिया हमें पूरा रन करबा एंड सो हम जो माने सब इडा जॉइन करना तो प्लीज जॉइन कर दियो तुम यू कैन डिस्कस विथ मेनका मैडम हे गला कि दीपक सर से डिस्कस कर दियो हला करी किरी यू कैन जॉइन दिस एंड हमें नेक्स्ट क्लास में प्रोसीड करबा लाइक विथ द अदर क्वेश्चंस एंड लाइक एवरी सैटरडे पूरा टेस्ट रहइबो राइट ओके सो दिस इज अबाउट इट एनी डाउट YouTube रे कार किछि डाउट अछि YouTube रे कार किछि डाउट रिगार्डिंग क्लास YouTube रे कनेक्ट डाउट अछि ओके ठीक है सर क्लास हम एंड कर दबा थैंक यू ऑल गुड नाइट थैंक यू सर गुड नाइट सर थैंक यू सर थैंक यू